Okay, now in this video section we are solving one more problem based on the construction of Mealy machine. Now the problem says that construct a Mealy machine for the input from 0 or 1. Okay, if input ends in 000, 3 consecutive zeros, the output will be A. If input ends in 111, and then the output will be B, otherwise the output will be C. So what this problem actually defines, let me first discuss about this thing. So the Mealy machine, we need to design a Mealy machine, we need to construct a Mealy machine that takes the input in the form of zeros and ones, and if the input ends with 000, so the output will be A, the output that was generated by the machine called A, and if the input ends with the 3 consecutive zeros, the output that was generated by the machine is B, otherwise the output will be C. So what we have understand with this problem, हमें एक Mealy machine डिज़ाइन करना है. उस Mealy machine के अंदर जो है इनपुट है वो 0-1 के फॉर्म में दिया जाएगा, 0-1 की स्ट्रिंग्स होंगी, और जो इफ़ द इनपुट जो हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, अगर उस स्ट्रिंग के अंदर 000 आता है एंड में, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो 000 पर ख़त्म होती है, तो आउटपुट हमें ए मिलना चाहिए. अगर स्ट्रिंग 111 पर ख़त्म होती है तो आउटपुट हमें बी मिलना चाहिए, और अदरवाइज आउटपुट विल बी सी. सो वी कैन से दैट हमें एक Mealy मशीन डिज़ाइन करना है. ओके, सो अगर हम सबसे छोटी स्ट्रिंग लें जो कि हमारे लिए आउटपुट, हमें वैलिड आउटपुट जनरेट करने में हेल्प करेगी, वो सबसे छोटी स्ट्रिंग्स सॉरी कौन सी होंगी? 000 एंड 111. So we can say you need to design a Mealy machine M just having the 6 tuples as Q0 input alphabets, transition function के बाद set of output alphabets and then the output function. Okay, now then the language अगर हम specify करें, सो वैलिड स्ट्रिंग्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? 000 यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा, 111 यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा, इट मे बी 4 times 0. एट द एंड वी हैव द स्ट्रिंग एज 000, सो इट विल ऑल्सो जनरेट्स A as the output. Okay, 1000, this is also a valid string that will generate the output A. So we can say, okay, or you can also say that if we have the string as 0 111, so this is also generating the output B. Okay, then 1, then followed by 3 times 1, this also generates the output called B. Otherwise, if the string is of this kind, so the output will be C. This also generates C, and so on. So we can understand with this set of strings कि हमें कहाँ पर आउटपुट A मिलेगा और कहाँ आउटपुट हमें B जनरेट होगा. You can see, अब हमें अगर मशीन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मशीन होगी उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी. The machine having possible number of states as can say Mealy machine will be of this kind. We have 1 0, another 0, and at last we have the third 0. Okay,
You can say if you have this kind of machine, oh sorry, we have 1, 1 and 1. So this we have the output as B here in this state and A here, otherwise the output will be C. Okay, so you can say that you can complete this diagram as this is what we call the Q0 state, Q1, Q2, Q3, Q4, okay, and this will be Q5 and Q6. Now अगर हम इस मशीन को प्रॉपरली यहाँ ड्रॉ करें, ओके, सो वी कैन ड्रॉ दिस मशीन एज Q0 with C, 0, we have Q1 with C, Q3 with C, and this is Q5 with the output A. So what we call Q2 with C, मतलब 111 आएगा या 000 आएगा तो ही हमें जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट्स हैं वो मिलने चाहिए, अदरवाइज आउटपुट जो है हमें C मिलना चाहिए. With B, here it is the output called B. ओके, बाकी स्टेट्स पर हमें C मिलना चाहिए. अब हम अगर ट्रांजिशंस को कंप्लीट करें, सो द ट्रांजिशंस आर, यू कैन से एक बार 0, फिर 0, फिर 0, सो वी हैव A. ओके, अब अगर इस स्टेट पर, इस पर तो 0 और 1 का ट्रांजिशन हो गया है, अब हमें इस पर कंप्लीट करना है. तो इस स्टेट पर अगर 1 आता है, सो हम देखेंगे 0, 1. ओके, हम उसका ट्रांजिशन कहाँ ले जा सकते हैं? So we have the input string if we are talking about 0 followed by 1. अब अगर इसके बाद 2 1 आ जाते हैं तो यहाँ आउटपुट हमें क्या जनरेट करना है? B. So we can make the transition of this 1. Okay, we can transit it here for 1. क्लियर है? Now अब अगर हम 0 का तो हो गया, अब इस स्टेट पर अगर हम बात करें, so again for 1, 0 0. I'm talking about this string called 0 0. ओके, अगर एक सिंगल 1 आता है और उसके बाद 2 बार 1 आ जाता है तो हमें आउटपुट मिल जाएगा. तो वी जस्ट नीड टू ट्रांसफर दैट ट्रांजिशन ओवर दिस स्टेट फॉर 1. ओके, नाउ एट दिस स्टेट फॉर 0, एनी नंबर ऑफ टाइम्स 0 विल कम. एक बार अगर 3 बार 0 आ चुका है, एक बार ऐसा हुआ है कि 3 बार 0 आ चुका है, स्ट्रिंग एंड होगी. अगर 0 आता रहेगा, स्ट्रिंग विल ऑलवेज एंड्स विद 3 consecutive zeros. ओके, देन अब अगर हम इसको ट्रांजिट करें 1 को इधर, इसका 1 के लिए ट्रांजिशन कहाँ जाना चाहिए? यहाँ इस स्टेट पर. सो फॉर दिस इट विल बी 1. ये 1 यहाँ लिख देता हूँ और जो ट्रांजिशन मैंने यहाँ ड्रॉ किया था उसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे. ओके, नाउ 1 हियर. नाउ अब हम बात करते हैं इस स्टेट पर. इस पर 1 का ट्रांजिशन हो गया है, 0 का बचा है. सो 1 0 0 0, तो स्ट्रिंग विल एंड विथ 0. सो वी कैन मेक द ट्रांजिशन ऑफ 0 हियर. नाउ एट दिस स्टेट 1 1, अगर 0 आया तो फिर हम कहाँ भेजेंगे इसको? यहाँ पर, ताकि यहाँ से for 0. ठीक है. Now from this state again the transition goes to here. So we can say that this is what we call the required Mealy machine. Okay, and we can define that Mealy machine
set of states as Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Similarly, Q0 will be the initial state, then set of input alphabets, we know that it is given 0, 1. Set of output alphabets, we have 3 kind of outputs that we're generating with the help of this machine: A, B and C. Okay, and then the transition functions, we can define it here. Okay, so the transitions are Q0 with C, so Q0 with input 0, Q0 with input 0, it move towards the Q1 state. Okay, then at Q0 with 1, the next transition is up to Q2. Transition at Q1 state with 0, Q1 with 0, Q3, Q1 with 1, Q2, now Q2 state with 0, it is Q1, and Q2 with 1, it is Q4. Okay, now Q3 with 0, transition goes to Q5, and Q3 with 1, transition moves to Q3 with 1, Q2. Now Q4 with 0, Q4 पर मैंने 0 का ट्रांजिशन डिफाइन थिंक नहीं किया है. Yes, there it is. So for 0 we have Q1. Now at Q4 with 1, it is Q6. Okay. Now then next is Q5 with 0 and Q5 with 1, Q5 with 0, Q5 itself, and Q5 with 1, it is Q2. Okay, and at last Q6 with 0, this is Q1, and Q6 with 1, we are moving forward with Q1, Q6 with 0, sorry, 0 के लिए यहाँ और 1 के लिए it will be there. So this is Q6 itself. Similarly, output function. Now, so you can say Q0 with 0, Q0 with 0, the output will be C. Q0 with 1, output will be, again we are reaching the Q2 state and the output at Q2 state is C, so it will be C. Similarly, we need to write for all the other states. So you can easily with this diagram we can write the output function here.
Okay, so at Q1 state for 0 we are transiting to Q3, and the Q3 state, the output at this state is C. Q1 at 1, Q1 with 1, so we have Q2 state, and the output at this state is C. Similarly we can write the all the other states. Sorry, C is the output, and Q2 with 1, output will be Q2 with 1, it reaches the Q4 state, so the output will be C. Okay, now at Q3 state at 0, Q3 with 0, it reaches the Q5 state, so then it will generate the output called A, and at 1 it reaches the Q2 state, so the output will be C. Okay, now the other outputs I'm writing here. Continue, here it is. I'm continuing with this here. At Q4 state for 0, Q4 स्टेट पर 0 के लिए ट्रांजिशन है आपका, आपने जो ट्रांजिशन यहाँ डिफाइन किया है 0 के लिए, दैट गोज टू Q1 state, and at Q4 with 1, this one is not for this transition, this one is for this particular transition from Q3 to Q2, not for Q4 to Q1. Now at Q4 state for 1, it moves to Q6, so Q4 with 1 we are actually representing output here. Okay, so Q4 with 1, so this is Q6 state, and the output is B, and here it is Q1 state, the output is C. Now at Q5 state 0, now at Q5 state for 0, we are at the same state called A, so we have the output as A, and at Q5 with 1 reaching to the Q2 state, so the output is C. Now at Q6 state with 0, Q1 state, so the output will be C, and Q6 with 1 reaching the Q6 state, so it will be B now. Okay, so you can see this is what we call the required Mealy machine for this problem. Yeah, that's all for now. Thank you.